everyone. So welcome in the online classes of Shivaji Group of Institution, and today I am going to teach biology. And as you all know that nowadays I am explaining lesson the tissues. So today's my topic is types of epithelial tissues. In my previous lecture I told you about epithelial tissues, its characteristics, and today I am going to describe its types. So first type of epithelial tissue is squamous epithelium. What is squamous epithelium? It is also called pavement membrane. Why? Because it provides pavement for all the body parts. That is, it is formed very thin and form delicate linings. And the cells which are found in squamous epithelium are flat and arranged very close. Next thing, what are its location? So it is found in walls of blood vessels, linings of body cavity, mesenteries, tongue, esophagus, Bowman's capsule, nephron, taste buds, eyelids, and lung alveoli. And what are its function? Its function is to protect and help in exchange of material. That means it helps in the process of diffusion. So student, first kind of epithelial tissue है squamous epithelium. Squamous epithelium को pavement membrane भी बोला जाता है. Why? Because it provides pavement for the body parts and it is formed by very thin and form delicate linings. जिन organs पे present होते हैं वहाँ पे इनकी एक thin layer होती है और ये delicate linings form करते हैं. इसके जो cells होते हैं these are flat and arranged very close. आप ये देख सकते हैं फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है इसमें और ये सब एक दूसरे से बहुत क्लोजली अरेंज्ड है. सो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन and these are cells. So this is the structure of squamous epithelium. So students, इसको pavement membrane कहते हैं जहाँ पे प्रेजेंट होता है थिन लाइनिंग होती है, डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करता है और ऑल्सो इसके सेल्स फ्लैट होते हैं और एक दूसरे से बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज लोकेशन कि ये टिश्यूज जो है ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, बॉडी के किन पार्ट्स में होते हैं. सबसे पहले लाइनिंग्स ऑफ बॉडी कैविटी. जितनी भी हमारी बॉडी कैविटी है उनकी जो लाइनिंग्स होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से ही फॉर्म होती है. नेक्स्ट वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में throughout the body blood vessels present है. What are the blood vessels? Blood vessels are those tubes or pipes through which blood transport from heart to other parts of the body or from other parts of the body to heart. हमारी बॉडी में 3 blood vessels है, arteries, veins and capillaries, जिनके थ्रू blood एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है. ये जो blood vessels की walls होती है उन walls का formation भी squamous epithelium से ही होता है. नेक्स्ट थिंग मेसेंट्रीज, टंग एंड ईसोफेगस. टंग हम सबको पता है व्हाट इज ईसोफेगस. ईसोफेगस हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है. जब फूड जो है माउथ से स्टमक के लिए जा रहा होता है तब उसको ईसोफेगस से ट्रैवल होके जाना पड़ता है. ईसोफेगस बेसिकली एज अ पाइप एक वर्क करता है ताकि फूड हमारा जो है माउथ से स्टमक तक जा सके. वहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं. बोनलेस कैप्सूल एंड नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में भी नेफ्रॉन किडनी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है. किडनी में जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है उसका जो वर्क कर रहा है, जो यूनिट है किडनी की, दैट इज नेफ्रॉन. एंड उसी नेफ्रॉन का पार्ट ही बोमेंस कैप्सूल भी होता है. इन दोनों में भी जो है स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट थिंग टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड जब टंग में प्रेजेंट है तो टंग में टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को टेस्ट करते हैं. स्वीट, सार, बिटर, ये सारी चीज़ें पता चलती है. These are because of different types of taste buds. In taste buds में भी जो squamous epithelium present होता है. Next thing eyelids. हमारी जो eyelids है उसमें भी squamous epithelium and lung alveoli. You all know what is lung. Lungs को हम हेल्प करता है वो हमें ब्रीथ करने में. हम जो भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं लंग से ही होता है. लंग्स में एक सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को एल्वेलाई बोला जाता है. एल्वेलाई हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. बेसिकली एल्वेलाई में जो है ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती है ऑक्सीजन एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के. बिकॉज हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है वो सिर्फ लंग्स को नहीं चाहिए, उसको ब्लड में मिक्स होना है ताकि ब्लड में वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हेल्प कर सके. और जो भी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो भी ब्लड से ही आता है ताकि वो फिर एक्सहेल हो सके. तो
तो ये जो एक्सेल इनहेल O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, इसके लिए हमारे लंग्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वही स्ट्रक्चर है alveoli. So this is about the location of squamous epithelium. Now what are its function? ये क्या फंक्शन कर रहा है, बॉडी में इसका रोल क्या है? So it helps in protection. जितनी भी जगह ये प्रेजेंट है, ये हर जगह पे क्या एक्सटर्नली प्रेजेंट है, एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म कर रहा है. थिन है मतलब मोटा है, डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स ये उन सारे स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जितनी भी जगह है प्रेजेंट था ये उन स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था. नेक्स्ट थिंग, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लंग एल्वेओलाई में प्रेजेंट होता है, लंग एल्वेओलाई से एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का, तो इस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है. दैट इज डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन. एंड ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, this is helpful because of squamous epithelium. Squamous epithelium help करते हैं ताकि diffusion का process easily होगा. So these are the functions of squamous epithelium. Now let's discuss about second type of epithelial tissues, which is cuboidal epithelium. Name से आपको समझ में आया, जब cuboidal की बात हो रही, that means cube shape की बात हो रही. Cube shape आप सबको पता है, क्यूब शेप है तो मतलब इसमें जो सेल्स, आप सबको पता है टिश्यूज का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. जो सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम को फॉर्म कर रहे हैं वो सारे सेल्स कैसे क्यूब शेप्ड है, उनका स्ट्रक्चर क्यूब के जैसा है. नेक्स्ट, अब इनकी लोकेशन क्या होती है, ये बॉडी के किस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं? सो इट इज फाउंड इन लाइनिंग्स ऑफ जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स जो हमारे जर्म सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल के जर्म सेल्स होते हैं, उनकी जर्म लेयर की लाइनिंग्स में मतलब आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है. एसिनाई ऑफ पेनक्रियाज. पेनक्रियाज हमारे बॉडी की एक ग्लैंड है जो हेल्प करती है हमारी बॉडी को डाइजेशन के प्रोसेस में, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है. थायराइड एंड थाइमस, अगेन ये ग्लैंड्स होती है. थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा है, इसमें हेल्प करता है सिलियरी बॉडी में, कोरॉइड्स में, आइस की लेयर में, एपिथेलियल लेयर ऑफ रेटाइना में, ये सारी जगह पे इसका फॉर्मेशन होता है एंड ये हेल्प करता है बॉडी को प्रोटेक्शन के. इसके फंक्शंस क्या है? सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, क्योंकि जितनी भी जगह पे प्रेजेंट है आउटर कवरिंग फॉर्म कर रहा है फिर वहाँ से उनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट थिंग, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. एब्जॉर्प्शन में किस तरह से हेल्प करेगा? जो भी इसको एब्जॉर्ब करना था, बिकॉज ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, जर्म लेयर में प्रेजेंट है, तो ये एब्जॉर्प्शन का भी वर्क करता है. नेक्स्ट सिक्रीशन. ग्लैंड्स बेसिकली जो है वो सिक्रीट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को, जो हेल्प करते हैं वेरियस प्रोसेसेस में. तो इस वजह से सिक्रीशन में ये ग्लैंड्स में हेल्प करता है. नेक्स्ट एक्सक्रीशन जो हो रहा है हमारी बॉडी से, उसमें भी हेल्पफुल होता है. एंड लास्ट दैट इट इज हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ जर्म लेयर्स एंड जर्म सेल्स participate in the process of reproduction, so it is also helpful in reproduction. So today we discussed about types of epithelial tissues. Number one, squamous epithelium, which is also known as pigment membrane. It is very thin and form delicate linings. Cells are very flat and arranged very close to each other. Next in its location is blood vessels, linings of body cavities, mesentery, sternum, esophagus, Bowman's capsule, nephron, taste buds, eyelids and lung alveoli. And its function is protection and helps in exchange of material. That means it helps in diffusion. Next is cuboidal epithelium. The cells of cuboidal epithelium are tube shaped. Its location is lining of germ layer, acini of pancreas, thyroid and thymus, ciliary body, choroids, layer of eyes, epithelial layer of retina. And its function is protection, absorption, secretion, excretion and reproduction. As you know that these basement is formed of connective tissues and the cells which are present are cuboidal cells. So this is all about squamous epithelium and cuboidal epithelium. Thank you. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you Geography Chapter 2 Physical Features of India for Class 9, in which I have described you the Himalayan and 3 ranges of Himalayas like Great Himalayas, Middle Himalayas and the Shivalik range. And now today I will continue the same chapter. And the second physical features of India is the Northern Plains.
उत्तरी भारत के मैदान। So let us start the chapter. The northern plain has been formed by the interplay of three major systems, namely जो बच्चों northern plain है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? उत्तरी भारत के मैदानों का फॉर्मेशन कैसे होता है? थ्री मेजर रिवर से, जिनके नाम है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से और नदियों और उनकी सहायक नदियों से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अ एलुवियल सॉइल। तो ये प्लेन का निर्माण कैसे हुआ बच्चों? एलुवियल सॉइल से हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. So this plain is very fertile. This is suitable for cultivation. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. तो इसका spreading area क्या है? 7 lakh kilometer है. The plain being about 2400 kilometer long and 250 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic combined with adequate water supply and favorable climate. तो ये बच्चों ये हमारा जो प्लेन है बहुत फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है और एडुकेट वाटर सप्लाई है। तो इट इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर वे में ये हमारे भारत का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है। The rivers from northern mountains are involved in depositional work. So student, the rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. तो बच्चों ये जो नदियाँ northern mountains से आती हैं उनका क्या काम होता है? वो deposition work करती हैं। In the lower course due to gentle slope, the velocity of river decreases, which result in the formation of riverine islands. The northern plain is broadly divided into 3 sections. तो northern plains को बच्चों 3 section में divide किया जा सकता है। The western part of the northern plain is referred as the Punjab plains. तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो किस चीज को रिफर करता है बच्चों? पंजाब का मैदान, पंजाब प्लेन को रिफर करता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द 5 रिवर्स। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ बच्चों? 5 रिवर्स से हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इसका फॉर्मेशन किससे हुआ बच्चों? इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों से। किसका फॉर्मेशन हुआ है? पंजाब प्लेन्स का। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। तो इस प्लेन का जो लार्जर पार्ट है बच्चों वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? द झेलम, द चेनाब, द रावी, the bees and the Satluj originate in the Himalaya. तो बच्चों this is called Punjab plains. This is called Punjab plain. The Ganga plain extend between Ghaggar and Tista rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partially Jharkhand and West Bengal to the east. Particularly in Assam, lies in the Brahmaputra plain. The northern plains are generally described as a flatland. तो बच्चों northern plains को हम लोग कैसे describe करते हैं? As a flatland, समतल मैदान के रूप में इसको describe करते हैं with no variation in its relief. It is true these vast plains also have diverse relief feature. तो इतने बड़े से मैदान के बहुत से अपने relief feature हैं। According to the variation in relief features, the northern plains are divided into 4 regions. तो इसके various features के आधार पर northern plains को हम लोग 4 divisions में divide कर सकते हैं। The northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivalik. तो बच्चों हिमालय की नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की श्रेणी में 8 to 16 किलोमीटर चौड़ी एक गुटिका, एक
नैरो बेल्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज दिस नैरो बेल्ट इज नोन एज भाबर। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, और इस बेल्ट के साउथ में, इस बेल्ट के दक्षिण में, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, मतलब साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के दक्षिण में जो नदियां होती हैं दोबारा री इमर्ज हो जाती हैं, दोबारा से फिर से निकल जाती हैं और क्रिएट अ वेट स्वापी एंड मार्शी रीजन, और बहुत ही नमी वाले क्षेत्र का फॉर्मेशन करती हैं, वेट एंड स्वापी एंड मार्शी रीजन को फॉर्मेट करती हैं। दिस रीजन इज नोन एज तराई। उस रीजन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं तराई। This was a thickly forested region full of wildlife। तो ये जो रीजन होता है ये बहुत ही thickly forested region है, full of wildlife। The forests have been created to create agricultural land। तो जो forest है वो क्या create करते हैं, agricultural land को create करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान से आए हुए जितने भी मिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे easily settle हो सके और उनकी livelihood अच्छे से चल सके। So this region created to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Dudhwa National Park are found in this region. The largest part of the northern plain is formed by older alluvium। तो बच्चों जो larger part होता है northern plains का, वो कैसे formed होता है, older alluvium से, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। They lie above the flood plains of the river। वो कहाँ पाई जाती है, रिवर्स के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। And present the terrace like feature, this part is known as bhangar। तो older alluvium is called bhangar while the newer flood alluvium is called खादर। तो बच्चों पुरानी जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, older alluvium को हम लोग क्या कहते हैं, older alluvium स्कार्ड भांगर। क्या बोला जाता है बच्चों उसको, भांगर। एंड न्यूयर alluvium is known as खादर। खादर तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और ओल्डर alluvium को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भांगर बोलते हैं। Now I am describing next physical features of India. Next physical features of India, the peninsular plateau, यानी प्रायद्वीपीय पठार। The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks। तो बच्चों ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये कैसे लगते हैं, जस्ट लाइक अ टेबललैंड, मेज की तरह इनकी आकृति होती है, इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड अ टेबललैंड। किससे कंपोज होते हैं, ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, पुरानी आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it is a part of the oldest landmass। तो बच्चों ये हमारा इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, it was formed due to breaking, मतलब जो हमारी पुरानी लैंड है गोंडवाना लैंड, उसके टूटने से और उसकी ड्रिफ्टिंग से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो जिसकी वजह से ये हमारे देश का पुराना लैंडमास कहलाता है। It is also part of the oldest landmass। The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills। इस ये plateau बहुत broad है, shallow hills है, बहुत ही गहरी इसमें घाटियां हैं, rounded hills हैं। So rounded hills, this plateau consists of two broad divisions। तो ये plateau consist करता है दो broad divisions को। This plateau consists of two broad divisions। तो ये plateau बच्चों consist करता है two broad divisions को, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau। कौन से दो broad divisions को consist करता है, the Central Highland and the Deccan Plateau। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering the major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highland। तो बच्चों the part of the peninsular plateau, इस peninsular plateau का part जो कि कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के उत्तर में कवर करता है, कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द, मतलब मालवा प्लेट्यू के मोस्टली एरिया को जो कवर करता है। दिस
this is known as central highland. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, central highland कहते हैं. What do you mean by central highland? The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as central highlands. The Vindhyan range is bounded by the central highland. जो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वो central highlands को घेरे हुई हैं on the south से, and the Aravallis, और Aravallis कहाँ से घेरी हुई है, north और west से. So the Vindhyan range is bounded by the central highland on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of राजस्थान. तो जो उसके वेस्ट में का जो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो मोस्टली एरिया क्या है बच्चों, सैंडी और रॉकी डेजर्ट. राजस्थान के सैंडी और रॉकी डेजर्ट्स को वो इंडिकेट करता है. द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली जो रिवर्स का फ्लो होता है इस क्षेत्र में, जिन नदियों से पानी आता है वो नदियों के नाम क्या है बच्चों, द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द कैन इज फ्रॉम सदर्न नॉर्दर्न मोस्ट, thus indicating the slope. The central highlands are wider in the west but narrower in the east. तो central highland बच्चों wider मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा है, कहाँ पे, वेस्ट में, और narrower है ईस्ट में. The eastward extension of this plateau, इस प्लेट्यू का जो eastward extension है उसको हम लोग क्या कहते हैं, boundaries of भागल खंड. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज ऑफ भागलखंड. द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर. तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इसके किसमें पड़ता है बच्चों, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में आता है. तो उसको पानी कहां से मिलता है, किस नदी से मिलता है, दामोदर रिवर से. So it is the eastward extension of the peninsular plateau. What is the eastward extension of the peninsular plateau is this plateau's eastward extension is known as Chota Nagpur Plateau. It is drained by the river Damodar. So students, the Deccan Plateau is a triangular landmass. ये कैसा बच्चों, triangular landmass है that lies to the south of the river Narmada. कहाँ पे ये पड़ता है, नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है. 3 prominent hill ranges from west to east. तो इसकी 3 जो prominent hill ranges हैं from that extension is from west to east are Garo Hill, Khasi Hill and Jaintia Hill from west to east. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी पेज नंबर 48 बच्चों विलोम शब्द चल रहे थे, विलोम शब्द पूरे नहीं हुए थे तो उन्हीं को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. बच्चों ध्यान से इसको आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे. जहाँ ब्लैक स्केच का प्रयोग करना है वहाँ पर वो करेंगे, जहाँ ब्लू पेन का प्रयोग करना है वहाँ ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे. ठीक है, देखिए उसी के आगे ठीक आगे लिखना है जागृत. जागृत का होता है सुप्त, करुण का निष्ठुर, निष्ठुर, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ, गुरु का लघु,
चतुर का मूर्ख है। इसके बाद बच्चों जन्म का मृत्यु। जय का पराजय। पराजय। तरल का ठोस। दंड का पुरस्कार। पुरस्कार। दानी का कृपण। कृपण माने होता है बच्चों कंजूस। दुर्लभ का सुलभ। सुलभ। धवल का कृष्ण। धवल माने होता है स्वच्छ। कृष्ण कृष्ण माने होता है काला। निंदा का स्तुति। निंदा माने होता है बुराई करना और स्तुति माने प्रशंसा करना। निर्दय का सदैव। सदैव। लोभी का निर्लोभी। लोभी यानी लालची। निर्लोभी। विशिष्ट का सामान्य। सामान्य। सत्कार का तिरस्कार। तिरस्कार। दुर्बल का सबल। दुर्बल माने कमजोर। दुर्बल का सबल। धर्म का धर्म। अधर्म। निरर्थक का सार्थक। सार्थक। मनुज का धनुज। धनुज। फिर बच्चों विजय का पराजय। पराजय। श्याम का शेर। शेर। साकार का निराकार। निराकार। स्वाधीन का पराधीन। पराधीन। विधवा का सर्वा।
6, शांत का शांत, विनीत का भ्रष्ट, स्थिर का स्थिर, स्थिर। ये देखिए बच्चों, विलोम शब्द मैंने पेज नंबर 47 पर स्टार्ट हो गए थे, तो कुछ शेष थे, उसको आज मैंने पढ़ाया है। एक बार फिर से देखिए, विलोम शब्द जागृत का स्वप्न, जागृत का सुप्त, करुण का निष्ठुर, कृतज्ञ का कृतज्ञ, गुरु का लघु, चतुर का मूर्ख, जन्म का मृत्यु, जय का पराजय, तरल का ठोस, दंड का पुरस्कार, दानी का कृपण, दुर्लभ का सुलभ, धवल का कृष्ण, निंदा का स्तुति, निर्दय का सदय, लोभी का निर्लोभी, विशिष्ट का सामान्य, सत्कार का तिरस्कार, दुर्बल का सबल, धर्म का अधर्म, निरर्थक का सार्थक, मनुष्य का धनुष, विजय का पराजय, श्याम का श्वेत, साकार का निराकार, स्वाधीन का पराधीन, विधवा का सधवा, शासक का शासित, क्षय का अक्षय, शांत का अशांत, विनीत का भ्रष्ट और स्थिर का अस्थिर। ये बच्चों आपके विलोम शब्द संपूर्ण हुए। इनको क्लास वर्क की कॉपी में कंटिन्यू आप लिखेंगे, लिख करके उसको याद भी करेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी पेज नंबर बच्चों 48 मैंने बोला था विलोम शब्द चल रहे थे, तो 48 से 49 पर विलोम शब्द समाप्त होंगे। पेज नंबर की कंफ्यूजन किसी तरह की ना रखें। पेज नंबर 48, 49 दोनों चले हैं और उसके पहले 47 भी चला, ठीक है। तो 47, 48 और 49 3 पेजों में आपका विलोम शब्द संपन्न हुआ, समाप्त हुआ है। अब मैं आपको पेज नंबर 50 पढ़ाऊंगी, वर्तनी, पेज नंबर 50। बच्चों मैं आपको पेज नंबर 50 में आज वर्तनी पढ़ाऊंगी। देखिए वर्तनी क्या होती है। वर्तनी परिभाषा देखिए, वर्तनी से आशय है वर्तनी से आशय है शब्दों के शुद्ध वर्ण विन्यास, शब्दों के शुद्ध वर्ण विन्यास से होता है। अर्थात कोई शब्द
कोई शब्द है। किस प्रकार लिखा कोई शब्द शुद्ध रूप में किस प्रकार शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। लिखा जाता है उसे उसकी वर्तनी कहते हैं। उसे उसकी वर्तनी कहते हैं। तो बच्चों, परिभाषा में आपने देखा कि वर्तनी से आशय है शब्दों के शुद्ध वर्ण विन्यास से होता है, अर्थात कोई शब्द शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखा जाता है उसे उसकी वर्तनी कहते हैं। नीचे देखिए, हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां वर्तनी संबंधी अशुद्धियां वर्तनी संबंधी अशुद्धियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब आपको किस किस संबंध से हमारी अशुद्धियां होती हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला है स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। हेडिंग डालेंगे, स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। ये बच्चों हेडिंग डालेंगे, हेलो बच्चों, ये जो हेडिंग मैंने आपको डलवाई है स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां, ये मैं अगले टर्म में आपको इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, थैंक यू। Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Myself Prachit Trivedi, your math teacher. Students, today we will start the new chapter which is algebraic identities or expansion. Okay, don't be confused between the chapter name, both are the same. Algebraic identities or expansion. Okay, now firstly what we will do in this chapter. Firstly, students, what is expansion? Expansion means to make anything large. Okay, if we have any equations, then expand it. Okay, now let's see the overview of this chapter. In this chapter, firstly we expansion of square. Okay, firstly we discuss the expansion of formula of degree 2, and then with the help of this identity we solve the question. And then we discuss the formula of expansion of degree 3. Okay, and then we use the solve the questions of this with the help of this formula. Okay, now what is algebraic identities?
Students, algebraic identities are the algebraic equation that are true for all the variables present in them. Okay. Now let's discuss should we know the if we square 5 square, we write it 5 into 5, okay, and it become 25. Similarly, if we want to square two terms, which is a plus b whole of square, we can write it a plus b, okay. Now what will we do? Firstly, we multiply a into a, which is a square plus ab plus ba plus b square. Then it become a square, ab plus ba both are the same, then 2ab plus b square, okay. Then the formula become a plus b whole of square is equals to a square plus b square plus 2ab, okay. This is the expand form of a plus b whole of square. Similarly, students, if we use a plus b whole of square is equals to a square plus b square plus 2ab, okay. Now we know that the formula a minus b, okay, a minus b is equals to a square plus b square minus 2ab. These are the identities, algebraic identities. A plus b, a minus b is equals to. Now students, if we add both the equation, then it become a plus b whole of square plus, as we know that when we add this type of equation, we add LHS to LHS and RHS to RHS, okay. Then a minus b whole of square, and a square become 2a square, and b square plus b square become 2b square, and plus 2ab minus 2ab will be cancelled out. Then a plus b whole of square plus a minus b whole of square is equals to, we take common 2, then it become 2a square plus b square, okay. This is the third identity, this, okay. Again students, if we subtract these two formula, we subtract it, plus 2ab minus 2ab. When we subtract this a plus b whole of square minus a minus b whole of square. As we know that when we subtract it, the sign will be changed, it become minus, 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 and plus change into, minus change into plus. Then plus a square minus a square plus b square minus b square will be cancelled out and become 2ab plus 2ab, okay. Then a plus b whole of square, a minus b whole of square is equals to 4ab. This is the fourth formula, this one, okay. What is the use of this identity? When we solve the question, we use this identity, okay. Now, students, same, if two terms for a, first term is a and second term of a, 1 upon a, then the square of a plus 1 upon a is a square plus b square plus 2ab, okay, with the help of this identity. Then when we solve it, a square plus 1 upon a square here plus 2, okay, a plus 1 upon a. This is identity number 5, okay. Similarly students, if we use here minus sign, then it become a square plus b square and minus 2ab, and this sign become minus, okay. This is identity number 6, okay. Now students,
a plus 1 upon a whole of square is equals to a square plus 1 upon a square plus 2. Okay, when we change it become a square plus 1 upon a square is equals to a plus b whole of square minus 2. Now let's solve some questions with the help of these identities. Okay? With the help of these identities, the first question is four x minus 1 upon 2x whole of square. Expand 4x minus 1 upon 2x. Here students, we know that we use the identity a minus b whole of square, which is a square plus b square minus 2ab. Okay, here a is equals to 4x and b is equals to 1 upon 2x. Clear? Now use this formula, 4x square plus 1 upon 2x square minus 2 into 4x into 1 upon 2x. Okay, 4 4 ja 16x square plus 1 upon 4x square. Square of 2 is 4 and x is x square, and here it minus 4. The expand form of 4 minus 1 upon 2x is equals to 16x square plus 1 upon 4x square minus 4. Clear? Now let's see the next example. Students, one identity is a minus b and a plus b. We multiply it. A into a is a square. A into minus b is minus ba. B into a is plus ab and b into b is minus b square. This is cancelled out, then become a square minus b square. Then this is the very important identity, a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. Okay, now let's see the use of this identity. If x minus 0.1 x plus 0.1, solve this. Okay, now what will we do in this question? We know that this is a minus b, this is a plus b. Terms are same, only sign will be changed. Okay, then we know that a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. Here a is x and b is 0.1. Okay, then x square minus 0.1 square, it become x square. 0.1 square means 0.01. This is the answer. Okay, students. Students, the next question is use the identities to evaluate 97 whole of square. Okay, then don't solve this question in this form, 97 into 97. This is wrong. Okay, here use identities. Then we use the identities. Now let's see which identity we use. Students, this is 97. Okay, we can write this 97 is equals to 97 is the 100 minus 3. Okay, 100 minus 3. Okay, now here we can use a minus b whole of square, which is a square plus b square minus 2ab, and value of a is 100 and b is 3. Okay, now a square means 100 square
plus b square means 3 square and minus 2 into 100 into 3. 100 square become 10,000 plus 9 minus 3 2s are 600. Okay. When we add this 10009 minus 600. Now subtract it. This becomes 9, 0, 10 minus 6 is 4 and 9. Then the answer is 940. 9409. Okay. Now let's see the next question. Evaluate 4a plus 3b whole of square minus 4a minus 3b whole of square plus 48ab. Student, we can solve this question with the help of this identity. Okay, this a plus b whole of square minus a minus b whole of square is equals to 4ab. We can directly use this identity. If you don't know this identity, then use the formula of a plus b whole of square, a minus b whole of square, and then solve it. Okay. Now a plus b whole of square is 4a square plus 3b square plus 2ab means 4a into 3b minus, we use bracket because there is minus sign, a square plus b square minus 2ab. Okay. Now plus 48ab. Students, here 4a square plus 4a square minus 3b square plus 3b square minus, then 4 3s are 12, 12 2s are 24ab, and this is also 4 3s are 12, 12 2s are 24ab, but it is in minus, and we use this minus sign and it becomes plus 24ab plus 48ab. Okay, now add it. 4 4 8 8 8 16 1 1 5 5 2 7 8 9 96ab. Then the answer is 96ab. So we can solve this question directly with this identity. Now let's see how we solve. Here, when we use this identity, which is a plus b whole of square minus a minus b whole of square, then the value is 4ab. Here, a is equals to 4a and b is equals to 3b. The answer is 4ab. 4ab. Plus, we use this identity only for this. Okay, then we can write plus 48ab. The value of 4ab. For a is 4 and 3b plus 48ab. Okay, same. 4 3s are 12, 12 4s are 48ab plus 48ab. When we add it, we get 96ab. Okay. Students, let's see the next question, which is if a plus b is equals to 7, ab is equals to 10, then find the value of a minus b. Now let's see the solution, how we solve this type of question. Students, we know that a plus b whole of square is equals to a square plus b square plus 2ab. Why we use this formula? Because we find the value of a minus b. And how can we calculate the value of a minus b? If we know that the value of a square plus b square. Because we know that the value of ab. But firstly we solve the value, we calculate the value of a square plus b square. Now put the value of a plus b is 7 and a square plus b square 2. ab is 10.
7 is 49 square a square plus b square plus 20. Then a plus b square is equals to 49 minus 20. Then a square plus b square is equals to 929. Okay. Now for a minus b, we know a minus b whole of square is equals to a square plus b square minus 2ab. Okay. What is the value of a square plus b square? A is from equation number 1. We put the value which is 29 minus 2 ab. ab is 10. Okay. Then 29 minus 20 which is 9. Okay. Means a minus b whole of square is equals to 9. It means a minus b is equals to under root 9. Then a minus b is equals to plus minus 3. Okay. Now students, that's all for today. We will solve some another questions of this arbitraries in my next class. Okay. Hello students, welcome to SUI online class 9 of physics. Students, today we will solve some numerical problems based on first equation of motion in chapter 8 motion. So students, our first question is a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. So students, we can see that in the question, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. So students, here given initial velocity u is equal to 80 kilometer per hour. Students, firstly we convert it into meter per second. 80 into, we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter upon, we know that 1 hour is equal to 3600 second. 0 to 0 cancel, and 800 upon 36 meter per second. This is the initial velocity of bus, and a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour. So now this is the final velocity of bus. Final velocity v is equal to 60 km per hour. Again we convert it into meter per second. 60 into 1000 meter upon 3600 second. 0 to 0 cancel. 600 upon 36 meter per second. This is the final velocity of bus, and time is given t is equal to 5 seconds. Students, here we have to calculate acceleration. So we use first equation of motion. We know that first equation of motion v is equal to u plus at. v minus u is equal to at, and now we can write here a is equal to v minus u upon t. v is given 600 upon 36, and u is 800 upon 36, and time is given 5 seconds.
taking LCM, 36 600 minus 800 upon 5. Here A is equal to minus 200 upon 36 into 5. Now 5 4s are 20 and 4 1s are 4, 4 9s are 36, and this is minus 10 upon 9. We can write it 1.11 meter per second square. Students, this is the acceleration of bus. Now this is our answer. Students, our next question is, a train is starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. Students, question says that a train is starting from a railway station and it means initial velocity of train u is equal to 0 meter per second and final velocity v is equal to, question says that train moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. So students, here final velocity is equal to 40 km per hour. Students, firstly we convert it into meter per second. So we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter upon 1 hour is equal to 3600 second. Here 0 to 0 cancel. Now 400 upon 36. Here 4 1s are 4, 4 9s are 36. 100 upon 9 meter per second. This is the final velocity of train and time t is given 10 minutes. Students, as we know that 1 minute is equal to 60 seconds, so we convert it into second. 10 into 60 second is equal to t is equal to 600 second. Now here initial velocity, final velocity and time is given and acceleration we have to find. So students, we use first equation of motion. We know that first equation of motion is equal to v equal to u plus at. Here we can write v minus u is equal to at. Now a is equal to v minus u upon t. Here a is the acceleration of train. A is equal to v minus u upon t. Value of v, final velocity is 100 upon 9 and value of initial velocity u is equal to 0 meter per second and time is given 600 second. Now students, 100 upon 9 into 600,
0 to 0 cancel, and 1 upon 54. After solving this, we get 0.0185 meter per second square. Students, this is the acceleration of train. Now, this is our answer. Thank you, students. Hello student, have a pleasant morning to one you all. Today we will start our language portion that was continued last 3 classes, the sentences. The topic was the sentences and we discussed the meaning of the sentence and the types. And the assertive type was discussed properly with you. Assertive आपको बताया गया था properly. Interrogative, it was also discussed with you. ये भी आपके साथ डिस्कस किया गया था. These both the types, इन दोनों types के दोनों parts थे बच्चों, affirmative one and simple interrogative, more interrogative. I also gave you many examples of these two. The third one was imperative. The third one was imperative. I also discussed with you the examples of the imperative sentences. I have given you many more examples of it. Just like in this sentence, there is some urge, request, order, command, suggestion. These types of the things are there. Just like you have to say, give me your book. Give me your book. Please do this work. Please do this work. Please help to me. Please help to me. Always do good for everyone. Always do good for everyone. So these are the examples of the imperative sentences. And there is also some types of the sentences which I started by using let. These are also coming this category. वो भी इस category में आते हैं. जैसे let me do this work. मुझे इस काम को कर लेने दो. Let's play today. आओ हम खेलें. Let's go for a morning walk. आओ morning walk पर चलें. Let's play for a while. आओ थोड़ी देर खेल लें. Let's have a fun. Let's have a fun. Let's have a cup of tea. Let's have a cup of tea. Let's start our pending work. So student, we have seen that imperative sentences are started with your main verb. Imperative sentences आपके किससे शुरू होते हैं? Main verb से शुरू होते हैं. Imperative sentences are started with your main verb. Fine. And let types of the sentences are started by let and after let के बाद what we put, हम लोग क्या रखते हैं? Object of the sentence. Object. Fine. Let me is your object. Let us is your object. Fine. So imperative sentence you have got very well. Now the fourth one is optative sentence. Optative sentence. Children, optative sentences are such types of the sentences. Optative sentences are such types of the sentences in which we congratulate to someone, we wish to someone, we bless to someone, we pray for someone. So these types of the sense come in the category of the optative sentences. Whenever we want to wish someone, whenever we want to congratulate someone, whenever we want to bless someone, we pray for someone, we curse for someone. किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को कर्स करना है, किसी को bless करना है, किसी को wish करना है. If these types of the sense are into our mind, we use optative sentence. हम लोग कैसे sentence use करते हैं? Optative sentence use करते हैं.
So optative sentences are such types of the sentences in which we wish to someone, we bless to someone, we curse to someone, and we pray for someone. Fine. And in optative sentence we use may or might. We use may or might. Suppose that you have to say, may God bless you. May God bless you. This is the optative sentence. This is the optative sentence. May God bless you. And one more sentence. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Congratulations. Congratulations on your success. And may she live long life. May she live long life. So in optative sentence we put the exclamation sign at the end of the sentence. In optative sentence we also put the exclamation sign. May God bless you. May you have a prosperous life. May you have a prosperous life means भगवान करे आपकी जिंदगी खुशहाल हो. May God help you. May God bless you. Fine. May God bless you like this. May they go to hell. This is the curse to someone. This is a curse to someone. May they go to hell. We put the exclamation sign at the end of the sentence. May you get money. May you get money. Have a nice journey. Have a nice journey. Congratulations. Good evening. Good evening. Good morning. Good evening. Good morning. Happy birthday to you. Good night. So these types of the sentences which we use for blessing to someone, we wish to someone, and we curse to someone. So these are in the category of the optative sentences. The last one is left over here, exclamatory sentence. Exclamatory sentence, that is called in Hindi Vishmayadibodhak Vakya. Vishmayadibodhak Vakya. So students, in these types of the sentence, we express our hidden feelings and emotions. हम लोग अपनी छिपे हुए emotions को, अपनी feelings को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं. So whenever we are in sorrowful mood, whenever we are dejected, whenever we are sad, जब हम लोग दुख की अवस्था में होते हैं या दुखी होते हैं, so what's the particular word we use? Alas. Alas is a sign of unhappiness. Alas is a sign of sadness. Alas is a sign of dejection and disappointment. Dejection and disappointment. So, which types of the words come in this category? Exclamatory sentence में alas. You have to put exclamation sign. Alas, my dear one has died. Alas, exclamation sign. My dear one has died. Put the full stop. So this is the exclamatory sentence. And hooray. Hooray is a sign of happiness. Hooray is a sign of happiness and pleasure and happy moment, excitement. So hooray, exclamation sign. Hooray, exclamation sign. India has got victory. India has won the match. Hooray. Exclamation sign. I secured first position in my class. I secured first position in my class. These are the sign of the happiness. These are the sign of the pleasure. Fine. One more sign is there. Bravo. Bravo is a sign for giving someone appreciation. Suppose that you have done a good performance. आपने बहुत अच्छी performance दी है. Then after bravo exclamation sign, you have done well. You have done well. So we have seen that in exclamatory sentence we just express our hidden emotions and feeling. And what are the words which we use? Alas, hooray, bravo. These are the words which we use in exclamatory sentence. So students, these are the types of the sentence. These are the types of the sentences that we discussed here today. These are the types of the sentences that we have discussed, that we discussed here today. And I'm just asking you some more sentences. Suppose that
there is a sentence, Mr. Sohan teaches us mathematics. Mr. Sohan teaches us mathematics. Which types of the sentence is it? It's a affirmative sentence. You can say affirmative sentence or assertive sentence. And do you eat mango? This is the interrogative sentence. Simple interrogative or interrogative sentence. One more examples. Work hard. Work hard. Work hard is your imperative sentence. How beautiful this building is. It's a exclamatory sentence. May God bless you. This is the examples of the optative sentence. So student, today we have discussed all 5 types of the sentence. So today your sentence topic is completed. Sentence topic is completed means we came to know very well what is sentence and the types of the sentence. So from our next class we will study the conversion of the sentence. It means we change assertive to interrogative, interrogative to assertive, and how will we change it we will see. So that is enough for you today. Thank you and have a nice day to one you all. Students, welcome to HCI online classes of chemistry. Today is the revision class of class 9 chemistry, and the second chapter is matter around us globe. So students, in this chapter, firstly, what is matter? In my previous lecture, I'll explain what is matter. So students, matter is that type of substance which occupies space and having mass is known as matter. So you can say that matter is also a type of substance. So what is substance? Substance is, you can say that substance is also a type of matter which occupies space and having mass. So substance आपका एक ऐसा substance आपका एक ऐसा matter होता है which occupies space occupy करता है and उसमें कुछ ना कुछ weight होता है. So is matter around us pure? It means those type of matter, those type of substance which present in our surrounding, जो आपकी surrounding में present है, they are pure or impure. It means वो substance आपके pure है या impure है. So what is substance? You can say that substance is also a type of matter which present in our surrounding, occupy space and having mass is known as substance. But what is the classification of substance? You can say there is substance which present in your surrounding, for example chair, table, blackboard, fan, etc. These are the example of substance. But substance are classified into many forms. So start the classification of substance. Students, classification of substance to 2 forms. First one is pure substance and second one is impure substance. First one is pure substance and second one is impure substance. So students, what is pure substance and what is impure substance? Pure substance is that type of substance which is found in a single phase. Which is found in a single phase is known as pure substance. Not a mixing of another substance is known as pure substance. And impure substance is all type of mixture, all type of compound. You can say that the example of impure substance, and they are also found in 2 different type of phases, is known as impure substance. For example, in pure substance like as any metal, like as for example gold,
If gold is pure, that is why you can say that it is an example of pure substance. For example, sugar. Only the particles of sugar present in a substance is known as pure substance. Sugar is found in pure form. For example, water. Water is also you can say that it is also a pure substance. Why? Substance because it occupies space and having mass. If you have some quantity of water put in your hand, it also have a weight and it also occupies space. That is why you can say that it is a pure substance. But if you want to mix some particles of solid particles, some particles of sand particles in a water, it make a mixture which is an example of impure substance. For example, like as muddy water. In muddy water, some type of sand particles, some type of mud particles, some type of soil particles, clay particles are mixed together in a water level, and water make a mixture, which mixture having some lots of impurities, which is an example of impure substance. So pure substance is that type of substance which occupy only single type of particles is known as pure substance. Students, wait. I will show you what is pure substance and what is the correct definition of pure substance. So, that type of substance which contain only single type of particle. That is very important word, single type of particles. Is known as pure substance. And what is impure substance? Impure substance are those type of particles which contain lots of impurities which present in our surrounding. Both type of substance are present in our surrounding, and there are many examples which are available in our surrounding. You can say that, you can also classify them. Which one is a pure substance and which one is an impure substance? Some question about the pure substance and impure substance present in our exercise. So what is impure substance? Those type of substance which contain more than 2 type of particles. Phase of these particles are also different, known as impure substance. For example, muddy water. Students, I hope you all are understood about pure substance and impure substance. I will continue with this chapter in my next video. Thank you. Have a nice day.